Not rarely in India, clothes are worn, passed on to a younger sibling or someone in need. Sometimes it becomes a mop or a duster. This reuse, giving a new avatar and a whole new life to a retired piece of clothing, is called upcycling by the fashion industry. Several brands in the fashion industry are upcycling, and it's a growing market with discards going up and demand increasing. Siblings Rini Mehta and Rohan Mehta set up Pitara, treasure box in Hindi, to upcycle old saris into aesthetically pleasing products like bags that suit the modern lifestyle. बचपन से मेरा शौक था क्रिएटिव फील्ड में, तो क्लास में भी सबसे ज़्यादा बोर्ड पे जो डेकोरेट करना होता है या कुछ भी होता था शुरू से था. फिर थोड़ी बड़ी हुई तो छोटे मोटे एग्जीबिशंस लगाने लगी, हैंडमेड कार्ड्स और इनके. बट पेरेंट्स को था कि नहीं, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो MBA करो, CA बनो. सो आई ट्राइड दैट ऑल्सो, बट दैट वाज अनसक्सेसफुल. मैं नहीं कर पाई. फिर फाइनली मैंने बोला मुझे क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना है. टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग मैंने किया, उसके बाद कई जगह मैंने जॉब किया. उसके बाद मैंने सोचा कि खुद का ही क्यों नहीं काम किया जाए. तो उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया बाय द नेम पिटारा, विच मीन्स treasure box. Rohan was a lawyer but got inspired and motivated by his sister's passion for art and creativity that he quit his practice and joined his sister. मेरे प्रोजेक्ट से लेके होमवर्क से लेके सब चीज़ उसी ने किया है. सो दिस पुश्ड मी टू हेल्प हर इन हर आइडिया ऑफ क्रिएटिंग पिटारा and box creativity, and thereafter it was a huge inspiration for me and to develop this thing for her. But like with every new business, Pitara faced hiccups too. Managing the huge volume of waste scraps, turning them into economically valuable products was a challenge. Rini started segregating cloth scraps and worked systematically on how to put the scraps to good use. तो फाइनली थोड़ा उसके ऊपर वर्क किया, R&D किया, कुछ हमने सर्विसेज क्रिएट किए, कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए उनको यूज़ करते हुए. तो पहले यहीं से शुरू किया कि हमने घर से ही साड़ी, चुन्नी और ये सब लाके यूज़ करना शुरू किया, इनको फाड़ के. और जो हमारे कतरन जो बचते हैं बैग्स बनने में, उनको हमने सर्फेस बना के यूज़ किया. We take lining in different portion, then the main fabric that we use, leather, jute, everything is segregated so that हम उस चीज़ को फ्यूचर में अपसाइकिल करने के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे. और उसके अलावा व्हेन हम लोग के पास और कुछ आइडियाज़ आते हैं, where we ask our customers and we go आउटसाइड इन द मार्केट, एंड वहाँ से हम पुराने फैब्रिक्स और सब चीज़ उठा के हम अपने नए प्रोडक्ट्स, उनमें अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करके, आइडियाज़ यूज़ करके हम लोग हमारे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं. दैट्स हाउ इट गोज़. But resources from a home are obviously limited. So Rini and Rohan started a rather unique campaign in their locality and on social media. एक बार ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे शुरू किया था कि आप लोग अपने पुराने कपड़े दीजिए, हमको भेजिए और आपको कुछ एक वाउचर या कुछ कूपन मिल जाएगा जिससे आप हमारे यहाँ शॉप कर सकते हैं. सो उससे एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हाँ, मैं अपना सामान कुछ भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो उससे कुछ डेवलप हो जाएगा. सो वी स्टार्टेड दैट ऑल्सो. Pitara's work reflects the art and culture of Rajasthan. All the products at Pitara are handmade. One can see the use of Bagru print and Zardozi in their products. The idea behind Pitara is to promote Indian culture, the artisans and things related to them, because हम लोग क्या देख रहे हैं, with the time changing, we are seeing that machinery and everything that we see around is moving into machinery. Now we need to bring back our culture, our heritage and the fabrics and the products that we use. If you will see the designs of our product, you will see most of them, हम लोग इंस्पिरेशन हमारे पुराने ज़माने से ही आते हैं. लेट्स से हमारा एक प्रोडक्ट है बटवा, सो दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर दादीज ओल्ड वॉलेट. सो उसको हमने इन अ क्रिएटिव एंड न्यू वे वी हैव डेवलप्ड द प्रोडक्ट इन अ वे कि वो मॉडर्न डे
में वो फैशन को भी अट्रैक्ट करे, बट कीपिंग इन द आइडिया दैट हाउ आवर कल्चर एंड हाउ द प्रोडक्ट्स इन पास्ट यूज टू बी। सो उसी को, उसके अलावा हम जो फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, लाइक लेट्स से ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स एंड इक्कत फैब्रिक, दीज आर ऑल प्रिंट्स एंड फैब्रिक्स जो हम लोग के पुराने कल्चर से आता जा रहा है। नाउ वी विश टू प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स एंड दोज काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड डिज़ाइंस। तो हम फ्यूचर में भी वही चीज़ों पे वर्क करेंगे। Upcycled saris are not all that Pitara works with. With research and development and experimenting, they came up with wallets and bags made from and woven using newspapers, magazines, and old tire tubes. घर में रद्दी बहुत पड़ी रहती है, रैपर्स हम फेंकते रहते हैं, तो आजकल वैसे भी सस्टेनेबिलिटी पे सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो जब मैं इस फील्ड में काम कर ही रही हूँ तो मुझे लगा कि कुछ अपसाइकल्ड और कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो न्यूज़पेपर लिए मैंने कुछ उनको थोड़ा सा वीव करवाया, स्ट्रेंथ चेक की कि है कि नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर है तो सबको थोड़ा रहता है कि फट नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। तो वीविंग में हमने काफ़ी प्रोसेसेस किए, काफ़ी टेस्टिंग की, तब कहीं जाके लगा कि हाँ अभी थोड़ा ये स्ट्रेंथ बनी है सरफेस में, इसको हम काम में ले सकते हैं। फिर हमने इसको प्रोडक्ट डेवलप किए। इसी तरीके से हमने दूसरे न्यूज़पेपर हो गया तो हमें लगा कि प्लास्टिक कुछ कलरफुल सा है, इतना पैकेजिंग इतनी ब्यूटीफुल बनाते हैं बट दैट इज़ वेस्ट, उसको हम कैसे यूज़ करें, सीधा डंप कर देते हैं तो उसे लैंडफिल्स में ही कन्वर्ट होते हैं। तो वी स्टार्टेड मेकिंग वीव्स ऑफ दीज प्लास्टिक वेस्ट ऑल्सो। तो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें हो रही है। अभी हम लोग और भी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हो गए, कुछ वूल के साथ, कुछ फेदर के साथ, इन सबको हम लोग मिक्स मैच करके टायर ट्यूब के साथ। टायर ट्यूब तो इतना अच्छा फील देता है, हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि उसको काट के हम लोग लूम पे वीव करके देखें कैसा आएगा, बट देन इट हैज़ केम आउट सो वेल कि इट गिव्स अ रियली रिच फील, गुड फील इन योर हैंड। Recycling for value addition has taken on a whole new meaning at Pitara that's not only upcycling saris but also recycling plastic waste and old tires to make luxury products. Pitara as a brand has converted sustainability into a business proposition. We live in an environment that is so old and we should not hamper the environment, and what we should think is कि जो भी हमारे products हैं, जो भी हम material या in day to day everything that we use in our life, we should not just buy them, use them and throw them away right away. So our thing is we should get back all those products, हम लोग उसी को multiple times use करें। Like let's say we do not use them for single time and एक ही product को हम 4 बार use करके we can extend the life of the product and extend our life cycle on this planet. So that's the idea behind all of this. Setu has become a bridge between the international market and the artisans. They promote economic, social and environmental sustainability while ensuring workers can earn a livelihood. Many of you would recall how your mother or grandmother would barter old clothes for new utensils. That's where Setu sources old saris through traditional barter system or scraps from the market and export houses. Following a zero waste process, even the smallest scrap is used in making a product. हमारे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिजन्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनको अपलिफ्ट करना विद स्पेशल फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट। चाइल्ड लेबर को किसी भी तरह से हटाना, लोगों को एजुकेट करना, गर्ल एजुकेशन के ऊपर काम करना, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना, ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करना जिससे आर्टिजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड जनरेट हो। इस पूरे प्रोसेस में आर्टिज़न की हेल्थ एंड सेफ्टी, रॉ मटेरियल का पूरा इस तरह से चूज़ करना कि जो कि एंड तक जाके एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इन सारे मिशंस को लेके हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनको सेल करके जो प्रॉफिट्स होता है उसी से ही हम लोग पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाते हैं।
हमारा एक पूरा जो मॉडल है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। हमारा जो एनजीओ है वो किसी भी ग्रांट और एड के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि लोगों को हम सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। Setu has helped several women break the shackles of patriarchy to step into a new future. जो कि हम कहते हैं हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनका ट्रस्ट जीतना। अगर आज मैं एक कच्ची बस्ती में जाती हूँ और मैं औरतों को कहती हूँ कि आप घर से बाहर निकल के आइए, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगी, एक भी औरत आगे नहीं आएगी। हमें क्या मिलेगा पढ़ने लिखने से? हम आप पे भरोसा क्यों करें? अगर हम चाहते हैं कि ये इतनी औरतें घर से बाहर निकल के काम करने के लिए आएँ, तो इसमें हमें रोल मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। हम अगर 10 जनों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये हम जानते हैं कि उस पूरे 10 में से शायद 2 ही औरतें ऐसी होंगी जो निकल के आगे आएंगी और जो अपना कुछ करेंगी, और हमारा टारगेट भी ये 2 औरतों से पूरा हो जाएगा। आज जब वो 2 औरतें आएंगी, घर में अच्छे पैसे लेकर के जाएंगी, कल को हम देखेंगे कि उनकी बच्चियां अब तक लड़कियां भी पढ़ रही हैं, या उन्होंने एक स्कूटी ली है, या वो एक अच्छे कपड़े पहन के वो 2 औरतें बाहर जा रही हैं, वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। और अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो गया है, क्योंकि अब हमारा एक नाम बन चुका है, लोगों को हम पे थोड़ा ट्रस्ट आ गया है, और हमने इतने सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज अब फैलने लगी है। Setu has created a safe space for women. Many women working at Setu have been survivors of abuse. Setu has equipped them with not just livelihood skills, but life skills like education to make them self-sufficient and independent. काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इलिटरेट होती हैं। उनको हम लोग इतना पढ़ना लिखना तक सिखा देते हैं कि वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकें, चीज़ों से अपडेट रह सकें, उनकी क्या राइट्स हैं वो सारी चीज़ें समझ सकें, जो भी वो आके काम करती हैं उसकी वो अकाउंटिंग कर सकें। इतना सब उनको पूरा केपेबल हम लोग करते हैं। मैंने यहाँ कंप्यूटर सिखाती हूँ, लेडीज़ को पढ़ाती भी हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और जो पढ़ने वाली लेडीज़ थी, बिल्कुल इनको अनपढ़ थी, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था इनको। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई, इनको बिठाना, बच्चों की तरह की शर्म आती थी, हंसती थी, मैडम हम नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल से इनको बिठाते, इनके बच्चों को चुप कराते, बच्चे रोते बीच बीच में, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे इन्होंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया शुरू में। अब ये फिर पैराग्राफ पढ़ाया, पहले बुक्स पढ़ाई, फिर अब पेपर पढ़ लेती हैं अभी। मैं यहाँ पे सारी लेडीज़ों को काम सिखाती हूँ। उसके अलावा इन लोगों को सबको ट्रेन करती हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से क्या होता है, तो ये सब लोग वो काम करते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने, उससे और आराम से अपने भी सारे खर्चे वगैरह सब कर लेती हूँ। किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। यहाँ पे हम लोग आए 2-4 पैसा कमाने के लिए। हमारे पति भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं ना वो सुरक्षित पढ़ सके और थोड़ा हम लोग भी आदमी बन सके। नहीं तो हमारे बिहार में कहाँ है इतना काम धाम, तो चलता ही नहीं है, किसी से हाथ भी फैलाना नहीं पड़ता है, हमारे पास पैसा एनी टाइम रहता है। अब इस ज़माने में जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, ये हम सबको पता है। जब हम कहते हैं कि इकलौता इलाज है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, रिड्यूस करने के बजाय आज के ज़माने में कंज्यूमरिज्म और होर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कंजम्पशन एक्सेस हो चुका है, हर जने को नए कपड़े चाहिए। मतलब साल में अगर 3 कपड़ों में काम चल सकता है नए, तो हम लोग 30 खरीदेंगे, एक बार पहनने के बाद उन्हें फेंक देंगे। हर जने के पास एक मोबाइल होगा, लेकिन फिर भी वो 1 साल बाद एक नया मोबाइल चाहेगा, चाहे उसमें 1 या 2 फीचर्स भी आएँ। तो इस पूरे ज़माने में जहाँ इतना कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पर रिसाइकलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो किसी न किसी तरह हमें प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके, उनको अपसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और कंज्यूमरिज्म और रिडक्शन तो डेफिनेटली की है ही, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। A model promoting economic, social and environmental sustainability. That's why Setu is a great example of clothes with a conscience.
Another brand that is dedicated to sustainability and women empowerment is I Was a Sari. As the name suggests, this brand is about giving old saris a new life. Founded by Stefano Funari, the brand offers a line of upcycled fashion products by taking an eco-ethical approach. But while starting I Was a Sari, this wasn't the original plan. I was working on a project in the central belt of Mumbai, and I found myself in a go-down full of saris, thousands of saris. And at that moment I got the idea that starting from that material, we could start a project, we could start a brand. Sourced from specialized traders and markets, the saris go through a rigorous process. The quality is carefully checked before they are segregated by color, size and print. The brand also envisions which sari would work as what. That is really extremely important, because the same sari can turn into a brilliant bag and into a terrible, boring pyjama or whatever else. So that's a very important step. Once that segregation is done, we continue the process with cutting the sari. There might be other processes involved, like fusing, and then we go to the final stage, which is normally the stitching part. The selected saris are then distributed to the production units in Mumbai. Once the production is done, the finished goods go through a second quality check before they are shipped. The saris had a previous life, so compared to a traditional production, the quality check in our case is playing an extremely important role, and it's never enough the check that we do, because there might always be a small stain, a small hole, and so we need to be extremely careful. Also because 95% plus of our production is for export, and we really have to meet very high quality standards. Though I Was a Sari is a brand making accessories with pre-loved saris, there's more to what makes them a pro-sustainability brand, empowering female artisans from underprivileged backgrounds. Whatever we do is about sustainability, following a quite straightforward 3 P's approach: planet, people and profit. We respect the planet because we mostly work with upcycled materials, saris and other materials as well. We respect the people because we work with artisans, mostly coming from disadvantaged backgrounds, and at the beginning of their relationship with us with very limited skills. We upskill them and we really turn them into professional artisans. And last but not least, the profit. So we are a social enterprise, but we do create profit, and therefore we are able to make our business viable. In 2021 alone, I Was a Sari gave employment to more than 175 female artisans. The brand is creating a social impact by not only providing skill development to its artisans, but also providing them with medical support. This exposure is helping women understand their potential and worth, though it comes with its own challenges. Over time, we see that the confidence is growing, and we really observe a deep transformation. Of course, we also need to teach them on the technical side. We need to upskill them in order to perform better cutting, stitching, and all the other activities. And extremely important is also for us to let them understand the importance of quality and reliability.
Apart from the social impact, I Was a Sari has also done its bit for the environment. The brand has managed to save the equivalent of 170,000 meters of virgin fabric. By upcycling pre-used saris, they've not only increased the life of a sari, but have managed to keep textile from the dump yards. First, I think that we should all buy less. Second, I think that we should buy for better quality, because with better quality products are going to last more. And last, I think that it is very important that all of us, we start documenting ourselves more about the brands that we are buying, and we select products that we know are respecting, once again, the people involved in the production and the planet. While brands like Pitara, Setu and I Was a Sari give a new life and a purpose to old clothes, there's still a long way to go. You too can have a sustainable wardrobe, and it's not even that hard.